everyone. Hope everybody is healthy and fine. So let's start a new chapter today. Class 12th Microeconomics. Very interesting chapter it is. The chapter's name is Indifference Curve. Equilibrium find किया जाता है. As we have already told you, equilibrium find करने के we have two methods. One method is consumer's equilibrium का. We have two approaches. First approach was cardinal approach, and now second one is the ordinal approach. Right? This is also called indifference curve approach. What actually equilibrium means? See, consumer's equilibrium always suggests a point where the consumer gets its maximum satisfaction. When we are talking about cardinal utility, that means we can measure the satisfaction levels in terms of cardinal numbers 1, 2, 3, 4 that were known as the utils itself. Right? In the present chapter, we will not discuss about the utils. We will simply learn about some of the combinations where the consumer is getting the same level of satisfaction across all the combinations or the bundles. Right? So ये approach कहलाती है बेटा the consumer's equilibrium indifference curve approach. Okay? So let us start with the chapter. Indifference curve analysis is a geometrical way to analyze consumers' behavior. So what we are going to study in this one, we'll learn about the indifference curve. We will also learn about the properties of indifference curve. So we will read about some of the indifference map. Then we'll learn about budget set and budget line. Shifts and rotation in budget line, that we'll also learn. And finally, the consumer's equilibrium. Right? So this is the whole content of the chapter. So let's discuss the indifference curve first. What it says, it's a geographical way to analyze consumers' behavior. This approach was propounded by John Richard Hicks, short form J.R. Hicks. Right? As you can see in the image itself, he was a person who created or given or propounded this theory, John Richard Hicks. Okay? So it measures utility ordinarily. It explains consumer behavior in terms of his preferences or rankings for different combinations of goods X and Y. And indifference curve is drawn on the form the indifference schedule of the consumer. See, in indifference curve approach, what we are given, हमें कुछ ऐसे bundles दिए जाएंगे where the consumer have same level of satisfaction at each level. चाहे वो कोई भी bundle इस्तेमाल करें, the consumer will get same level of satisfaction, right? तो ऐसा ही कुछ हम पढ़ने वाले हैं, ऐसा ही कुछ हम सीखने वाले हैं in the indifference curve approach itself, right? So let us take an example of what actually indifference set says. First of all, we are drawing an indifference set. Let's take example of two commodities.
सो डेजर्ट सबको अच्छे लगते हैं, स्वीट सबको अच्छी लगती हैं. विच इज द फेवरेट स्वीट और द डेजर्ट? ओके, so rasgulla. And which one is your favorite, Devyansh? Okay, katli. Wonderful. So let's discuss one by one. Here we have the combinations. Okay, and here the person is. Let's name this person Mr. X. Okay, person का नाम क्या है? Mr. X. So at A combination, if the person is consuming 1 unit of rasgulla and 10 units of katli, he will have his stomach full and the satisfaction he will gain is the maximum point. Okay, the same level of satisfaction can be drawn by the person when he consumes 2 units of rasgulla and 7 units of katli. This equilibrium or this maximum point of satisfaction continues the C point also when the person is consuming 3 units of rasgulla and another 5 units of kaju katli. And the final point where he may consume 4 units of rasgulla and finally how many points? 4 points of kaju katli. So at each level, Mr. X is having same level of satisfaction, right? So this is actually an indifference set. It is a table showing different combinations where any consumer is attaining same level of satisfaction whether he consume combination A, combination B, C और D. कोई भी combination वो अगर लेगा same level of satisfaction gain करेगा. अब बात की जा रही है कि सर यहां तो 7 ही है, यहां पर 2 ही है बेटा, यहाँ 5 है या 3 है. लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन वी आर गेटिंग, राइट? रसगुल्ला खा के उससे ज्यादा सेटिस्फेक्शन होता है, तो ही इज कंज्यूमिंग लेस ऑफ रसगुल्लास एज वेल एज मोर ऑफ कतली, राइट? सो इसी को हम बोलते हैं इंडिफरेंस सेट. नाउ व्हाट एक्चुअली इंडिफरेंस कर्व मींस? इसी इंडिफरेंस सेट को जब हम एक ज्योग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे कर्व बना के, दैट विल बी नोन एज द इंडिफरेंस कर्व. यस निखिल, डेफिनेटली ग्राफ होता है बेटा, एंड द ग्राफ जो कि हम अब डिस्कस करने वाले हैं. लेट्स मेक द ग्राफ पार्ट. So here we have the y-axis, here the origin is, and here we have the x-axis. Okay, which thing will be kept at x-axis? Definitely the goods or the commodity which are in increasing order, the rasgulla part will be at x-axis. जो बढ़ रहा है वो रहेगा x पर. Okay. So in our case that is the rasgulla. Okay. And which will be at y-axis, that is kaju katli. Okay, so rasgulla are 1, 2, 3 and 4. And kaju katlis are till 10. So let's take a scale of 2 kaju katli at each centimeter. At A combination, if we talk about, where the coordinate will be marked, where 1 is rasgulla and 2, 10 is kaju katli. So here 1 is rasgulla and kaju katli 10 is here only. So first coordinate will be marked here only. Okay. At second, if we talk about, that is 2 and 7. So 7 it will be here and 2 will be here. At C level, this is 3 and 5. This is 3 and 5. At next level, it is 4 and 4. 4 and 4. So the show somewhere around this type of curve. Now the shape of the curve, that is indifference curve. It is known as indifference curve.
Okay, the consumer will attain same level of satisfaction whether he is at this point, at this point, at this point or any other point in this curve. इस कर्व के ऊपर किसी भी पॉइंट पर अगर हम मार्क करेंगे कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन होगा, लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन में कोई भी चेंज नहीं आएगा. व्हाट इज डिफरेंस? डिफरेंस मतलब अलग अलग होना और इनडिफरेंस मतलब अलग अलग ना. तो इनडिफरेंट मतलब कंज्यूमर क्या हो गया, कंसिस्टेंट हो गया, चाहे मैं ये इस्तेमाल करूं, ये कॉम्बिनेशन लूं, ये लूं या चाहे ये लूं, मुझे सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन हर एक लेवल पर हो. सिंपल, फेयर इनफ. ना इसी इंडिफरेंस अगर हम कर्व की बात करें बेटा, इसकी शेप जो आती है दैट इज कॉन्वेक्स शेप. व्हाट इट इज? कॉन्वेक्स शेप. आई होप इट इज क्लियर विद एवरीवन. ओके, यस, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग ही होगा. सो देयर आर मल्टीपल प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व आल्सो दैट विल डिस्कस इन अ लेटर क्लास. सो let's have further discussion regarding this. What it says, the indifference curve. What actually indifference curve means? It's a diagrammatic representation of indifference schedule. So we have drawn indifference schedule first. Now if we just represent that diagram, that in the diagram, then itself is known as the indifference curve. आपने सेट बनाया, उस सेट को जब आपने डायग्राम में कन्वर्ट किया तो उसी को हमने क्या नाम दिया? इंडिफरेंस कर्व. It's a line that shows all possible combination two goods between which a person is indifferent. तो ये क्या है? बेसिकली वो लाइन बताता है इंडिफरेंस सेट, इंडिफरेंस कर्व, इसमें पर्सन क्या हो जाता है? इनडिफरेंट हो जाता है. He will attain same level of satisfaction चाहे वो कोई भी पॉइंट पर स्टैंड करे. ओके, now what is indifference map? Indifference map when one or more than one indifference curve are drawn इन सिंगल फिगर. ओके, एक ही फिगर में, एक ही डायग्राम में जब एक से ज्यादा इंडिफरेंस कर्व बनाए जाते हैं उसी को बोलते हैं अपन इंडिफरेंस मैप. अब सर बात आती है कि क्यों बनाए जाते हैं. तो बड़ी सिंपल बात है बेटा, एज सुन एज इनकम इंक्रीज होगी, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे क्या होगा, जो कॉम्बिनेशंस अटेन किए जाएंगे वो भी ज्यादा से ज्यादा होंगे. राइट, तो आपका इंडिफरेंस कर्व जो है वो आउटर साइड में जाता जाए. ओके, so an indifference map is a group of indifference curve each of which represent a given level of satisfaction. If an indifference curve shifts to right, the level of satisfaction goes on increasing from the point of view of satisfaction I1 and I2, I3 and I4. So let's have an indifference map also. Let's draw an indifference map now. Here the y is given O and the x origin. Okay, at x origin, x axis, what should we display? Say suppose commodity x. It can be any commodity, and here we will represent commodity y. So this is IC1. This is IC2, IC3, IC4. C, जितना ज्यादा आउटर IC होगा, मल्टीपल डायग्राम्स, मल्टीपल इंडिफरेंस कर्व्स आपने एक ही में बनाए तो इसी को बोल देंगे इंडिफरेंस मैप. क्या बोल देंगे बेटा? जितना ज्यादा आउटर IC है उतना ग्रेटर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन आपको मिलता है. सीधी बात है, इसे कहते हैं मोनोटोनिक प्रेफरेंस. क्या बोलते हैं? द हाइयर द कंजम्पशन ऑफ द गुड्स द ग्रेटर विल बी द सेटिस्फेक्शन. भाई ऑब्वियसली एक एप्पल खाना अच्छा है या दो? ऑब्वियसली जितना ज्यादा कंज्यूम करोगे उतना ज्यादा अच्छा लगेगा. सीधी बात है. एक गुलाब जामुन अच्छा है या दो? ऑब्वियसली दो. तो जितना ज्यादा कंजम्पशन करोगे उतना ज्यादा लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन इंक्रीज होगा. एंड द सेम इज नोन एज द मोनोटोनिक प्रेफरेंस. क्या कहते हैं इसको? इसी अजम्पशन पर बेस्ड है हमारा इंडिफरेंस मैप भी, जो कहता है कि जितना ज्यादा आउटर साइड में कर्व होगा उतना ज्यादा सेटिस्फेक्शन वो शो करेगा. सो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन इसमें कौन से वाले पार्ट में शो हो रहा है? IC4 में. राइट, उससे कम किसमें बेटा? एंड आफ्टर दैट IC2
and finally IC1, right? So this is how the satisfaction goes on increasing when the consumption of the goods increases. Okay. Now in this diagram, as you can observe, multiple indifference curves are drawn at the single point of time, at the single diagram itself. तो इसी को हम बोल देते हैं इंडिफरेंस मैप. क्या बोलते हैं रवि? Is it clear with everyone? Okay now. So the same is the definition here. Now let's discuss the next part, and that is some assumptions for indifference curve. So how can we draw this indifference curve? What are the assumptions for it? Let us discuss it one by one. Okay. Now, one it is consumer acts rationally as to maximize satisfaction. What is rationally? Rationally means intelligently. एक मिजरेबल जो आदमी होगा, एक माइजर कंजूस जो व्यक्ति होगा, वो यही कहेगा जितना कम कंज्यूम करता हूं उतना ज्यादा बेटर होगा, राइट? दैट्स द सेम थिंग. So first assumption we have discussed. Now second one is there are two types of goods. At least दो goods आपको given होंगे. One is X and another is Y. Third one is utility is measured ordinarily. What is ordinarily? That means हम उसको perfectly units में measure नहीं कर रहे हैं, यूटिल्स में measure नहीं कर रहे हैं. जैसे हम कार्डिनल नंबर से measure करते थे पिछले जो हमारी अप्रोच उसमें, लेकिन इसमें हम ऑर्डिनरीली इसको मेजर कर रहे हैं, केवल और केवल कॉम्बिनेशन देख रहे हैं of the units, not the utils. Okay. Next is it is based on the axiom or theory of diminishing marginal rate of substitution. Now what is MRS? MRS is how much you are losing upon how much you are gaining. Delta loss upon delta gain. And let's prove this one also with our schedule. So we have drawn schedule in this part, right? Let's calculate MRS XY or marginal rate of substitution. Okay. MRS. Here we have Rasgulla and Kaju Katli. Definitely Rasgulla and Kaju Katli we will mention R and K. So how much you are losing at first level? Nothing you are losing. At second level you are losing 10 to 7, which is 3. 3K you are losing to gain how much of Rasgullas? 1. Right? How much you are losing? 7 to 5, that is 2 Kaju Katli to gain how much of Rasgulla? 1 again. Again you are losing 1 Kaju Katli to gain 1 Rasgulla. So as you can see here, 3:1, 2:1, 1:1. That's in the declining trend itself. MRS XY कैसा दिख रहा है आपको? Declining दिख रहा है. दिख रहा है बेटा? तो जब जब ये डिक्लाइनिंग में होगा, हमारा जो शेप ऑफ इंडिफरेंस कर्व आएगा वो हमेशा कैसा आएगा? कॉन्वेक्स आएगा. कैसा आएगा? एंड द सेम थिंग इज रिटन इन द अजम्पशन आल्सो. अजम्पशन यही कहती है कि हमारा इंडिफरेंस कर्व का जो MRS XY होगा वो हमेशा डिक्लाइनिंग ऑर्डर में होगा. दैट इज आवर अजम्पशन. ओके नाउ हियर इट इज. Fifth one is the consumer is consistent in his choice. That is, if one time he chooses bundle A or B, he will not choose B over A in the another part. That means simple सी बात है कि कॉम्बिनेशंस कुछ ऐसे रहेंगे कि एक का तो हमेशा कंजम्पशन बढ़ेगा और एक का घटेगा. ऐसा नहीं होगा कि वापस से कंज्यूमर ने प्रेफरेंस को चेंज कर दिया, नहीं नहीं मेरे को काजू कतली ज्यादा पसंद है, रसगुल्ला कम. नहीं नहीं, कंज्यूमर का प्रेफरेंस कंसिस्टेंट रहेगा. अगर उसे रसगुल्ला ज्यादा पसंद आ रहा है जल्दी काजू कतली, then he will increase the consumption of rasgulla only rather than of kaju katli. Okay. Now, consumers' choices are characterized by transitivity. It means that if the consumer prefer A to B, he must prefer A to C. ठीक है भाई. obviously A, B, काजू कतली रसगुल्ला, okay, and काजू कतली गुलाब जामुन, काजू कतली रसगुल्ला and काजू कतली गुलाब जामुन. तो definitely
अगर उसकी पसंद काजू कतली ही है तो उसे रसगुल्ले और गुलाब जामुन दोनों से बेटर क्या लगेगी, काजू कतली लगेगी. ओके, द सेम थिंग इज रिटन हियर ऑल्सो. इट मीन दैट द कंज्यूमर prefers A to B and B to B. He must prefer A to C also. Okay, now here the next part is the MRS, which is marginal rate of substitution, that we have already discussed and also we have calculated, right? What it says, the marginal rate of substitution is the rate of exchange between some units of good X and Y which are equally preferred. The MRS of substitution, MRS is Y, is the amount of Y that will be given up for obtaining each additional unit of X. यानी how much you are losing to gain an additional unit of the Y commodity or X commodity, right? तो सिंपल से हम इसको क्या फॉर्मूला लगाएंगे बेटा, डेल्टा लॉस अपॉन डेल्टा गेन. हाउ मच यू आर लूजिंग अपॉन हाउ मच you are gaining in the next part. क्लियर? ऑब्वियसली हमेशा अपन जो y ओरिजिन है या y एक्सेस जो है उसी पर लॉस को रखते हैं, तो डेल्टा y ऊपर आएगा. एंड गेन हमेशा हम रखते हैं बेटा x एक्सेस पर, तो वो हमेशा रहेगा हमारे डिनोमिनेटर. इज इट क्लियर विद एवरीवन? नाउ so now let's discuss about the properties of indifference curve. How many properties of indifference curve are there? Can anybody tell? कितनी प्रॉपर्टीज होती हैं? वेरी गुड जोली. Yes, 5 properties are there for indifference curve. The first one is given here as an indifference curve has a negative slope. What does this negative slope means? That means it is always downward sloping. It is always downward sloping. None of the indifference curve will be made like this. This is an upward slope. ऐसा indifference curve नहीं होता. हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है बेटा, नेगेटिव स्लोप क्यों होता है? आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू द रीजन रिगार्डिंग दिस. व्हेन द रिलेशनशिप बिटवीन any of the two commodities or the components is negative. What does negative relationship means or inverse relationship means? Whether the consumption of one commodity is increasing, and for increasing the consumption of one commodity the other one has to be decreased. जब एक commodity का consumption बढ़ रहा है और दूसरे का कम हो रहा है, या फिर एक का कम हो रहा है दूसरे का बढ़ रहा है, when both the commodities consumption is going in inverse directions, तो हमेशा हमारा स्लोप कैसा रहेगा, नेगेटिव रहेगा. See in our case also where we have made the indifference set, here the indifference curve set is there. Now what it says, जैसे जैसे आपने कंजम्पशन कतली का डिक्रीज किया, रसगुल्ले का कंजम्पशन इंक्रीज होता गया. That means here we have Kaju Katli and here we have Rasgulla. As soon as we have increased the consumption of Rasgulla, the consumption of Kaju Katli has been decreased. तो भाई सीधी सीधी बात है, ये क्या है, इनवर्सली जा रहे हैं एक दूसरे से. इसी को कहते हैं नेगेटिव रिलेशन, और नेगेटिव स्लोप जो आता है वो इसी वजह से आता है. क्लियर? So we have left with 4 more properties of indifference curve. I hope the chapter we have discussed till now is quite understood by you all, right? So just revise this once again and we'll discuss in our next class the rest part of the chapter. Okay? Thank you so much.